on robotics, wherein we'll be exploring Arduino and its application in various projects. So we'll start off with some basic programming and then move on to Arduino. Then we'll tell you about some projects such as LFR, line following robot, and an intruder sensor. These projects are really great for you in the long run, as you can also add them in your resume. Okay, so if you have a keen interest in electronics and wish to make some great projects, Arduino is the way to go. Your seniors will tell you that. Without further ado, I call forward my colleagues Divyam and Vansh to start. Just one last thing, do stay tuned until the end, as we have a quiz based on the workshop that we'll be conducting, no outside questions. And we have some very exciting prizes in store for the winners. Okay. One last thing, is there anyone who has a problem with Hindi being the mode of communication? No. Let's start. Vansh and Divyam, let's start. So hello, आवाज आ रही है everyone? Yes, Divya, you are audible. वो just connection lost हो गया था तो कैसे start करें? हाँ. You should start presenting the screen. Visible है ना सबको? Fine, Divya. So hello everyone, कैसे हो सब? बता दो एक बार, मतलब chat box में बता दो सारे. तो तुम में से कोई ऐसा, मतलब तुम में से कितनों ने पहले आर्डिनो कर रखा है? मतलब कोई माइक ऑन करके बता दो. मतलब ये मतलब नहीं भी है तो भी मतलब तुम बता सकते हो. काफी टाइम से सोच रहा था आर्डुइनो नहीं, बट रास्पबेरी पाई का जो नया बोर्ड आया ना, रास्पबेरी पाई पीको, उसका मुझे सीखने का काफी मन था. ओके. मतलब तुमने आर्डिनो के बारे में पहले कभी कुछ देखा है, मतलब पता है इसके बारे में? हाँ, उसके बारे में देखा है मैंने कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं लोगों के, बट एज सच कभी यूज नहीं करा. Okay. So okay, let's everyone start. So these are your SIG mentors, as you can see on screen also. So basically, we will introduce you to the Arduino from the very basic level. We will first introduce you to the Arduino of all basics, what is it and what it contains, and how can we program it, also its coding structure and all. And we have also some beautiful project on LFR for you that you can also mention on your resume also. That's Uncle Pellet. So basically, what is Arduino? Arduino is basically a open source hardware device which we can program or design according to ourselves. And it contains of various analog and digital devices, and we can program it very easily. So basically, it contains numerous devices on it. That is, we have a microcontroller board, that is a power supply board, and USB port to communicate with PC easily. And the main component which controls the whole Arduino board is our Atmega 328 chip, which you can say that it is basically the heart of the Arduino board. It controls the every function of Arduino board from the very basic level to a very advanced level. And it contains very flash memory also, जिससे हम ये decide कर सकते हैं कि कितने lines का code हम Arduino में लिख सकते हैं. और basically इसमें हम अलग अलग digital signals भी दे सकते हैं, analog signals भी दे सकते हैं, because it has both analog and digital capability on its board. So मतलब what is microcomputer, मतलब what is microcontroller, आप सब सोच रहे होंगे. तो basically जैसे आप हमारे कंप्यूटर्स में होता है ना, नॉर्मली रैम होता है, हमारा कंप्यूटर का इंटरफेस होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट. एंड इट इज बेसिकली स्मॉल स्केल कंप्यूटर कह सकते हो आप, जिसमें हम कोई भी इनपुट देके आउटपुट इजीली निकाल सकते हैं. वैसे तो मतलब डिफरेंट आर्डिनो बोर्ड्स में डिफरेंट चिप्स यूज होती हैं, पर सब इसमें जो हम मेजरली यूज करते हैं ना, हम जो जिसपे हम आज तुमको बताएंगे यूएनओ बोर्ड,
इसमें हम यूज करेंगे ATmega 328 चिप, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज चिप। अब आपको जैसे दिख रहा होगा, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ Arduinos अवेलेबल इन द मार्केट, जो जिसे आज हम आपको बताएंगे, दैट इज UNO बोर्ड। जैसे आप देख सकते हो, Arduino मेगा बोर्ड, लिली पैड, दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ Arduino। Divyam, sorry to interrupt you. I guess it would be better if you just share your whole screen. They might see it very clearly. Okay, okay. One second. अभी विजिबल है फुल स्क्रीन? Yes, yes, Divyam. It's ओके best. ओके, मेरा जस्ट थोड़ा कनेक्शन इशू आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। So basically, this is the main structure of our Arduino board. You can see that is, first of all, we contains the digital pins that is numbered from 0 to 13, and you can also see some curve sign on the some pins that is called PWM pins. These are basically the pulse width modulation pins. This means that if you give an analog input, they will sense out the digital output to you. And on the just little bit of these pins, you can see an on button. This is basically our main power on button. If this is on, means your Arduino board is can be used, and it is off, you cannot use your Arduino board, that is Arduino board is off. And just right below to it, you can see an built-in LED on the Arduino left side, that is just. You can see this is the by default connected to pin number 13. Basically, when it is goes pin number 13 goes high, this pin automatically turns on, and when it goes off, it automatically turns off. And just below it, we can also see the ATmega 328 chip, that is a rectangular shaped box. This is basically the main heart of the Arduino board. It controls the every function of Arduino board from the very basic to advanced. And you can also see we are having a 6 analog pins that is numbered from A0 to A5. You can take any analog output from here on your any program which you want. And there is also a power supply in which they are providing different voltages. You can also ground the voltage if you need low voltage. Basically, Arduino is used for the low voltage devices. It cannot be accessed for high voltage devices. As you can see, there is a power input. Basically, it is a power DC jack. That is it good enough to operate Arduino with. And we are having a input voltage of around 7 volts to 12 volts on our Arduino board, basically. And we have also a USB port. Through it, you can connect it to your laptop, and you can also program it. And now, as you can see, when you bought computer or any laptop, you see some technical specifications of it, that is उसमें कितनी RAM है, मतलब size. Just similar to that, Arduino has some technical specifications. That is it uses a microcontroller of ATmega 328 chip. Its clock speed is basically 16 megahertz. Its flash memory is around 32 KB, and its static random access memory is basically around 2 KB. Don't confuse between the SRAM. It is just similar to the random access memory which you are having on your laptops or PCs. Divin, And now we have someone has asked in the chat, could you please explain clock speed once again? okay. Clock speed is basically when you write any code, we are having a syntax of loop in the programming language of Arduino. When it automatically runs on the program, it will execute the program. The condition is true. That is the clock speed. After every particular finite limit, it will execute its code again and again.
We will also show you the coding program that is shown by Vansh also. And now we are having a EEPROM. This is basically electronically erasable programmable read-only memory. Its size is also 1 KB. As you can see, these all values are very small. This is not means we cannot write any large code. We can write even 1000 to 2000 lines of code in Arduino very easily. And in supply voltage, it provides 5 volt. And I have basically told you it has total of 14 digital pins and 6 analog pins, and its weight is also very less, that is 25 grams. As you can see in the figure, we can connect it the Arduino to our laptop, and the LED is blinking. That is means it is working correctly. And now, basically, what is digital or what is analog? Digital is basically which can take only discrete quantities of set, like 0, 1, 2, 3. But analog can take any values, that is 12.8, 25.002, any random value. It is continuous basically. That is, you can assume also the range of temperature also. And now the basically sensor is basically that something transforms the physical quantity into electrical value. As you can see, the graph of the photocurrent of illuminance, they increases rapidly with the increasing value of illuminance. Thank you so much, Devon. Like, can you move it on to the next slide? Am I audible? Just tell me before I proceed further. Yes. You are Yeah, audible, yeah, Manish. sure. Cool. So, hi guys. Like, furthermore, you've been acquainted of, been familiarized what basically Arduino is by the Devyam. Like, थोड़ा coding part देख लेते हैं यार, because what you have to do at the end, you have to write codes to run how, like to particular execute any program. You have to do the programming in, like इसका syntax basically C++ से ही होता है. तो just before proceedings, like एक बार बता दो किसने पहले C++ करी हुई है, or who all are aware with the C++? Yeah, it's bit based on the C++. Like syntax is bit not clear, so you easily be able to understand, right? So no worries यार, ठीक है, जिसको आती है देखते हैं एक बार, ठीक. That's very great, ठीक. तो जिसको आती है बहुत सही. uh the topic is data types. Basically यार, what in the basic programming, what you have to do, you basically have to initialize a number, or you have to define a particular number x. So there are many data types, whether it's integer, it's character, so it depends on what basically you have to use, right? Whether we have to use the alphanumeric values, or we have to use the integer values, decimal values. So for each and every number we have a certain defined data type, the prototype, and we use it as a data type, that is the integer, character, long, or floating type, right? For the integer values, like we know the what the integer is, like -1, 0, and 1, ये सब number, we have an integer. So if we have to initialize a number, what we use, we tell the compiler, listen, it's an int number, and we name that particular value as a variable, that is x, ठीक है. बट वो कैसा डेटा टाइप है, इट्स एन इंटीजर, एंड उसके वैल्यू हमने, फॉर एन एग्जांपल, हमने यहाँ 1200 सेट कर, ठीक. Moving on to the character, यार एक और चीज, we have a certain limit set up by the, like the normal language ki integer value should be from this to this, and if we have to use a number greater than the integer, then we have a long data type which can use more greater number than this. If we have to initialize a x with a very large number, so we have to use long keyword in it, right? Moving on to the character, yeah, character are basically the number we have used in the C++ normal, तुमने देखा भी होगा, ABCD numbers ASCII code से relate होते हैं, and they basically represent the value -127 to 128, right? Long type I just
discuss it with you. Floating type here, basically what in the integers we can't take the decimal values. For initialing the decimal values, we set a different prototype that is called the floating point, and we just use it as a float and initialize a number. ठीक. So like it also given in the example, what we have to what simply write float, then take it as a variable name num and assign it a decimal value. So this is the main basic syntax what we have when we have to initialize a number with a particular variable name, right? Next slide please. Right. So before moving on to the main code, what we have to do, basically have to perform various set of operations. Right. So what basically are the operators? Just have a look on them. तो यार सबसे पहले एक चीज और, just importance of semicolon statement. We have to write the various statement in the C++ command, not set C++ Arduino coding, right? Because it's not a C++, it's basically Arduino coding. Though syntax varies, matlab it's very much similar, but yeah, right? So until and unless you define a particular variable and you don't write semicolon, it will not execute. Compiler will throw an error, right? So it's like a necessary kind of thing that if you until and unless you can't put a semicolon at the end, it won't be treated as a statement. Right, coming on to the operators part, we have a certain defined operator list, right, to perform various specific operations. तो क्या होते हैं ऑपरेटर्स भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं. एक होता है मैथ्स ऑपरेटर, राइट. व्हाट बेसिकली मैथ ऑपरेशन डू, यू विल ऑलवेज able to understand it by just name. It helps us to do the mathematical program operation, like the plus means, the addition, negative means, subtraction, and various things, right? Multiplication, division. Logical operators, they are basically associated with the true false values, whether it's true or false. Like it's given in the first bracket that it's the equal to operator, right? So we have used the equal to sign 2 times and just showing if two numbers are equal, then it is true, otherwise it's false. Second one is not equals to. If two numbers are not equal to each other, like if A is not equal to B, then it returns true, otherwise it's false. The next is AND operation and OR operation, right? They basically, you'll understand later what basically are AND and OR. Comparison operators, you'll always understand by the word comparison. They used to basically compare two numbers, A and B. Let's say if A equals to B, then it returns true and false. Like if A greater than B, then it's returned true, otherwise false. So they are basically working like that, right? So this one thing more, right? We have understand what the importance of semicolon is, but we usually have to write some lines in the code just to for the remembrance की what basically this code tell. और हमें कुछ आदत होती है कि यार ये लाइन यहाँ अगर हमने कोड लिखा तो कुछ पॉइंट ऐड कर दें जिससे हमें पता रहे. तो बेसिकली कमेंट्स, राइट? तो हाउ कैन वी ऐड अप comments in this line? We can, there's two ways. If it is a single line comment, just use this, right? And if it is a multi-line comment, so there is this, the syntax is shown in the PPT, right? Next. Thank you. So yeah, these are the also type of operators we have to perform. These are the most likely used operators in the language. We have seen later in the code on the projects as well. So first one is plus plus, that is increment. Right. Devin, could you please just turn off your mic? One second. Thank you so much. So please back slide. Right. So compound operators, they are basically also a set of operators which we have usually used these type of operators in our normal Arduino coding. First is plus plus, that is the increment operator. What basically they tell us? They tell us if we, let's say we initialize a variable, let's say P, and we assign it a value 30. And now we want to use increment operator. So what basically increment operator does, it increase the value of P by 1 and make it 40, nothing else, right? Decrement operator just decrement the value of P by 1 and make it 12.
compound addition, compound subtraction, and you'll see, because you're not able to understand what basically it meant to, but you'll see able to see later. Like I'll just tell you the syntax. If you want to add two numbers, right? You what you said ki uh, I want कि p की वैल्यू p plus a हो जाए, right? पहले p की वैल्यू 13 थी, e की वैल्यू 5 थी, but I want p should be assigned in such a way that p becomes p plus a. So we write the same in compound addition terms. You'll understand it later, right? I'll tell you in the code, and probably in the LFR. Next slide, please. Devyam, next slide, please. Right. So control statement, यार ये important है, ठीक है? ये देखना पीछे if statement. Right. So what basically control statement mean? We rather call it a conditioning statement. Why? If else statement you'll already understand. अगर ये नहीं तो ये, right? So what we basically do, we simply define if and write certain condition in it. And if it is a single statement, we can leave it without the curly braces. But if there are the more than one statement, then we have to add this curly braces, right? So ये important है, देख लेना. So what basically it meant to, they were back side, right? So what basically they do, if a particular conditioning is true in if, then if statement executes such statements. Otherwise, if the condition come out to be false, then it not execute the statement. So basically, if is true, then it execute. But in the end, क्या होता है ना if की true हुई ना if else की true हुई, तो it basically execute the statement of else block, right? तो यही काम होता है इसका. Next slide. Right, switch case. तो this is also same working life if case. ठीक है, इसमें क्या होता है, we particularly define a variable x. हमने switch case में लिख दिया एक चीज और हमने cases बना दिए कि अगर if variable matches with the case 1, then execute the statement under case 1, right? if variable की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाती है तो केस 2 की जितने भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. एंड इफ नो वन केस, इफ nothing else matches, then what we have to do, we have to do the default, like we have to proceed with the default and execute the statement which are under the default category. So these are the basic syntax of switch case. Next slide. Right, loop. Like basically we have, what we have seen is a conditioning statement. Those conditioning statement associated with a particular condition ki if the particular condition is true, then execute statement. But if we have to run a loop, let's say we have to write write number such that it should be less than 10, so 0 1 2 3 till 9. So we can't use a if loop again and again many times. What we do, we take help of the loops, right? In the for let's start with a for loop, you'll understand it better, right? So what for loop tells us, it basically tells us first you initialize your variable, right? What basically you have to use a variable कि एज अ वेरिएबल तुम्हें क्या यूज करना है. हमने कहा हमें एक वेरिएबल लेना है जो इंट होगा, एंड उस वेरिएबल का नेम हमने आई सेट करा, एंड वी हैव डिफाइन अ सर्टेन कंडीशन, right? If value of I is less than value, a particular value will assign anything according to the code what demands it, right? You simply execute the statement, and then if you execute, then you have to increment it by 1, because we have used the I++, that is the increment operator, right? So this is the basic generalized thing. You may be just Vansh, could you just explain do while again? There was a lag during that. actually I have not explained do while and while till then. I'll just Okay. okay, cool. So I'll moving on to the while and then do while. Okay. So moving on to the while loop. What basically while loop said, he while loop said us if a particular condition is true, then execute such statement. What we do in the while loop, we basically initialize our variable beforehand. We like run the loop, right? What we do, we usually define the code
आर वेरिएबल, सॉरी राइट, वी सेट की एक हमने वेरिएबल डिफाइन करा इंट आई और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी. नाउ वी मूव ऑन टू द कंडीशन पार्ट. हमने नॉर्मल लिख दिया कि इफ i इज लेस देन 10 देन एग्जीक्यूट सच स्टेटमेंट्स. तो एग्जीक्यूट टिल i की वैल्यू लेस देन 10 होगी और हम यहाँ एक कंडीशनिंग ऑपरेटर्स भी डाल देंगे, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कि अदरवाइज इफ हमने इंक्रीमेंट नहीं करा तो इट अगेन एंड अगेन वो एग्जीक्यूट होके चली जाएगी, राइट. सो एक क्वेश्चन है यार सबके लिए, बताओ चलो, अगर इफ आई राइट वाइल और कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह लिख दिया 1 इज लेस देन 2, तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो हमारा लूप, बता सकता है? राइट राइट, इनफाइनाइट टाइम्स, राइट. सो क्यों, देखते हैं यार उसको. व्हाट वी डू, वी सिंपली राइट अ कंडीशन कि लेट्स से व्हाइल 1 इज लेस देन 2, राइट. तो हमने उसको एक कंडीशन दे दी 1 इज लेस देन 2, बट उसने बार बार गया लूप पे, उसने उसने चेक करा, उसने चेक करा कि यार देखो 1 तो 2 से कम है, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा. ठीक है, हमारा ये लूप कभी एंड नहीं होगा, इसलिए वी हैव टू डिफाइन सर्टेन ऑपरेटर्स. हियर वी आल्सो यूज द ब्रेक स्टेटमेंट टू स्टॉप द लूप वेयरएवर वी नीड इट. लेट्स से मैंने सिंपल लिख दिया कि यार हमें 100 नंबर करने हैं, मैंने लिख दिया व्हाइल 1 लेस देन 2 एंड प्रिंट नंबर्स और इंक्रीमेंट करता जा रहा हूं उनको, ठीक है. बट जैसे ही 100 होगा और एक कंडीशनिंग स्टेटमेंट भी डाल दी कि इफ नंबर बिकम 100 देन ब्रेक, तो वो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है. तो ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार इन जैसे लूप्स में. लाइक कमिंग ऑन टू द डू व्हाइल लूप, व्हाइल वी आर डिस्कसिंग इट एट द लास्ट, बिकॉज व्हाइल लूप का समझना पहले ज्यादा जरूरी था, ठीक. व्हाट डू लूप डिमांड्स अस, व्हाट इट सेड, इट सेज कि तुम पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो और देन कंडीशन पे जाता है. तो इसमें यार एक प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास कि स्टेटमेंट एक बार तो रन होगी. वाई, बिकॉज हम पहले स्टेटमेंट रन करा रहे हैं, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं, कि पहले स्टेटमेंट चेक करी देन कंडीशन चेक करो. तो लेट्स से मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट लिख दी कि वाइल 1 इज ग्रेटर देन 2 और स्टेटमेंट में लिख दिया कि प्रिंट माय नेम इज वंश, ठीक. तो वो क्या करेगा, पहले तो उसने प्रिंट कर दिया, फिर वो कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन देगा, कंडीशन रॉन्ग है, वो अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा. पर हमारा कोड एक बार एग्जीक्यूट कर चुका है, बिकॉज यूज द डू व्हाइल लूप इन विच इट सेज कि तुम्हारा जो कोड है वो एक बार तो रन करेगा ही, बिकॉज हमने स्टेटमेंट पहले रन करा, लाइक एग्जीक्यूट करके उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी, राइट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. राइट, कोड स्ट्रक्चर यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई, बिकॉज व्हाट वी हैव टू डील बेसिकली एट द एंड इज द आर्डिनो, राइट. आर्डिनो में ये लाइक आई ऑलरेडी टेल यू कि सी प्लस प्लस से कोड सिंटेक्स थोड़ा वेरी करता है, बट एवरी कोडिंग लैंग्वेज हैज इट ओन पैरामीटर्स एंड स्ट्रक्चर सिंटेक्स इट रिलेट्स विद. तो कोडिंग स्ट्रक्चर्स में यही होता है, इट बेसिकली डिफाइन टू टाइप ऑफ लूप्स. एक होता है void setup and it used to indicate the initial value of the system on starting. So means you'll understand it later while I'll see you some example ki what basically you meant by the initial values of the system. And void loop, you'll already understand by the term loop ki it contains a statement that will run whenever the system is powered setup. After setup, like first executes setup, providing the initial values to the system and then run the loop, right. Next, Devam, next slide, please. Right. So, input and output. Basically, you've been familiarized ki what how our Arduino board look like, because we have pasted a picture back with Devam even explained to you certain pins, the modes as well. So here we are discussing on that ki how it works, right. यार देयर आर मेनी पिन मोड्स कि हमें आर्डिनो का एनालॉग सिग्नल्स आते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिजिटल आ रहे हैं एनालॉग, तो हमें बाइनरी वैल्यूज पता चल रही हैं, हम एनालॉग सिग्नल्स भेज रहे हैं, उनसे हमारा कोड ऑपरेट हो रहा है. तो ये सब होता है इसमें. तो बेसिकली जस्ट टू गेट द वैल्यूज ऑफ दोस फंक्शंस एंड राइट कि हमारे डिजिटल की वैल्यू क्या है, हमें क्या साइन करनी है, एनालॉग और ये सब, तो हम सर्टेन हमने फंक्शन डिफाइन कर दिए. तो एक एक का फंक्शन जानते हैं कि क्या क्या काम होता है, ठीक. नेक्स्ट स्लाइड. राइट, तो सबसे जो बेसिक चीज होती है ना वो है पिन मोड. अब लाइक you have to go and perform a certain function on a particular pin, but you don't know
whether it's input or as output. So what you do, you simply go in the pin mode command, and with the help of pin mode command, you simply just tell that we are using this pin as my input and using this pin as my output. इसका syntax क्या होता है? You just write pin mode in the bracket pin की value. If you use the pin number this, let's say I'm using the 13, then 13 comma mode कि हम कैसे use कर रहे हैं, whether it's input or is it output. ठीक. Digital write. Digital write, it's basically write a high or a low value to the digital pin कि ये high होगा या low होगा. राइट, इट्स अस कि हमेशा हाई रख रहे हैं. तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है? डिजिटल राइट, पेन नंबर हमने डिफाइन कर दिया है और इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू हम इसकी हाई रखेंगे. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. राइट, तो यार इनको समझते हैं हमने क्या करा. फर्स्ट हमने एलईडी कनेक्ट कर दी अपने पिन नंबर 13 से. तो हमने पिन नंबर 13 यूज करनी है. तो व्हाट बेसिकली वी डू, वी यूज अ इंट डाटा टाइप एंड बिकॉज वी आर यूजिंग द नंबर्स, तो हमने इंट में बेसिकली डिफाइन करा, वी सेट और हमने एक वेरिएबल यूज करा उस पिन नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए. तो वी यूज अ वेरिएबल लेट पिन एंड असाइन इट अ वैल्यू 13. तो हमारी पिन नंबर 13 का नेम क्या होगा? लेट पिन. हम void सेटअप में गए और अपनी इनिशियल वैल्यू सेट कर दी कि लिसन व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट लेट पिन एज माय आउटपुट पिन, वी वांट आवर पिन नंबर 13 एज माय आउटपुट एंड वी दिस इज द इनिशियल वैल्यू. दैट्स व्हाई वी हैव टू initialize this condition in the setup loop, like in the void setup part. Hope you getting my point. Right, in the loop what basically we have to do, we have to run the loop. तो what like हमने डिजिटल राइट का देखा था कि इसे हाई कर देगा, लो कर देगा. तो हमने क्या करा? हमने वही करा, डिजिटल राइट लिखा ऑपरेशन एंड मेक द पिन नंबर 13 एज हाई. देन वी वेट फॉर 1000, लाइक डिले होता है, वेट फॉर अ सेकंड. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड दिस डिले कमांड मोर ओवर व्हेन संकल्प डिस्कस द एलएफआर प्रोजेक्ट विद यू. राइट, then again digital write and you set the let pin value as loop. Right, so why we are doing this, yeah, you'll understand when you see the project, because you will understand the basic theory part where we are doing, but the motive of doing this you will understand it later. Take next slide. Right, digital lead. What basically digital lead do? हमने बोला था कि यार वेरियस ऑपरेशंस हो रहे हैं डिजिटल अनलॉक के. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी डोंट नो कि इस पिन के पास हाई वैल्यू है, लो वैल्यू है. विद द हेल्प ऑफ डिजिटल राइट हमने कुछ पिन्स को वैल्यू असाइन करी थी, बट हमें इन जो हमारे आउटपुट पिन्स हैं उनकी वैल्यू हमें पता भी तो करनी है क्या आ रही है. विद द हेल्प ऑफ डिजिटल रीड व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग, वी आर रीडिंग द values of those pin whether it's high or it's low, or with the help of digital read function we are able to do that. In the setup command what we do, we initialize the initial value system ki I use this pin as my output and this pin as my input. And in the void command, like in the loop command, what we do, we read the input pin. Right, if it is a digital read function, like with the help of digital read function we assign the mode of in pin to the val. ठीक, and with the help of digital write we assign the lead pin as the well like the val value. तो एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से हमारी इन पिन की जो वैल्यू थी ना वो लो थी, तो हमने वैल्यू को जो ये val वेरिएबल है हमने इसको क्या दे दिया? लो दे दिया. एंड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल राइट कमांड हमने पिन नंबर 13 को क्या दे दिया? लो दे दिया. हमने डिफाइन कर दिया कि पिन नंबर 13 हमारी लो है. ठीक, तो कमेंट्स में दिख रहा होगा, पहले क्या करा हमने? रीड ऑपरेशन करा, read of the input read the input pin number 7 and then set the led to the button. ठीक, तो यही बेसिकली हमने करा. नेक्स्ट. राइट, Arduino Uno applications. Devin, would you like to explain or I'll proceed? Okay, I'll tell. Okay, don't touch it. Just slideshow. Right. राइट, बेसिकली यार यू सी कि हमारा आर्डिनो का अभी तुमने देखा, यू विल फैमिलियराइज विद द कोड, यू विल बी सी जस्ट सी कि हाउ कैसे कोड काम कर रहा है. तुमने देखा कि हमारी कैसे उनो जो आर्डिनो उनो होती है वो दिखती है, उस पे पेन्स होती हैं, ये एनालॉग डिजिटल फंक्शंस हो रहे हैं. बट इसका बेसिकली काम क्या है? व्हाई वी हैव डिफाइन दिस आर्डिनो उनो? तो यार बेसिक जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना
like even Sankalp will show you a project that is line following robot. तो वहां पर ही इसका बहुत यूज आता है, like the system like being machine. तो you'll understand, क्योंकि ओपन सोर्स हार्डवेयर प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है, तो इसकी मदद से हम कोई भी हमने जो एक्सचेंज होता है एनालॉग और डिजिटल फंक्शंस का, हम इजीली कर पाते हैं. सो दिस इज द मेन यूज, राइट? So over to you, Sankalp. Hope I'm able to just deliver what basically I want to. Thank you, guys. Uh, so, am I audible? Yeah, Yes. Sankalp, you are perfectly audible. Yeah. So now that you have a basic idea of Arduino, we'll be showing you a project which is line following robot. I'm just sharing my screen and please confirm if it is visible. Yeah, is my screen visible? Yes, Sankalp, it's visible. Yes, You Sankalp. are audible too. Yeah. Yeah. Sorry, I think I'll just share it again. Yeah. And everyone, please listen this project very carefully because this is very great project that you can add on your resume. Please. Yeah. So let's start with the project. So now after going through all that theoretical stuff, now it's time to see these things working in actual projects. And I'm quite sure that it would be quite fun for you all to see how it all works. So now the robot which we are trying to make here is basically follows a certain path which is controlled by a feedback mechanism which mainly contains the sensors that we will talk about in detail soon. And through that feedback mechanism, it constantly gets its instructions and moves accordingly. And these line following robots have many industrial applications like in automobile industry, in industrial automations, load carriers. For example, in many industries, robot performs the task of material handling. And in order to automate that process of material handling, these robots has to be guided properly. And the simplest solution to that problem can be to paint the correct stripes on the floor for the robot to follow. And hence the deployment of these LFRs would make the transportation of these materials way more convenient. And there are various other sectors where the LFRs can be used by making some advanced modifications in them. So now to make it easily understandable for you, so we have divided this project into basically four main parts. And first is the sensor, which is for line detection. And second is the main controller, that is of course our dear Arduino Uno board. And the third is our motor driver. And at last, motor for precise motion in both direction. And we will go through each of the part in detail, so don't worry, just hold on to it. So now next slide. So now let's discuss about each of the component of the block diagram that we just showed you earlier. So first is the sensor part. So the LFR follows a line, and in order to follow a line, robot must detect the line first, right? So now the question is how to implement the line sensing mechanism in an LFR. So to do that, either LDR light dependent resistor or an IR sensor, infrared sensor can be used here. And in this very project, we are going with the IR sensor just because of its higher frequency or higher accuracy. So infrared sensor consists of basically two elements. First is transmitter and second is a receiver. Transmitter is basically an IR LED which produces the signal, and the IR receiver is a photodiode which senses the signal produced by the transmitter. And second main part is our Arduino Uno board, and we program our Arduino board through our Arduino IDE that Divyam and Van discussed about, and so that it processes all the data that is going into it from the various type of sensors and perform the instructions as we want it to perform. And the third main part is our motor drivers. Next slide, Sankalp.
So our third main part is motor drivers. So the reason to use a motor driver here is because the output signal that comes out of an Arduino is not sufficient to drive the motor. And on top of that, we need to rotate the motors in both directions. Therefore, we use a motor driver to drive the motor as required. And as the motor driver is also able to sufficiently current the drive. And here in this project, we are going to use the L298N motor driver, which is a dual H bridge motor driver and is sufficient for our two motors. What this motor driver does is that it allows us to control the speed and direction of the two DC motors that we are going to use in this project which are running at the same time. So that's how it helps us in these projects. And this motor driver can all drive the DC motors that have voltages around 5 to 35 voltages with a peak current of up to 2 amperes. And the four main part is our BO motors. And BO motors is the short form of battery operated motors. These motors are most commonly used in our hobby grade projects like this one only that we have made just for the sake of fun. So where we are working with basically small DC motors. So we have used two DC BO motors at the rear of the line follower robot. These BO motor provides good torque at the lower operating voltages. And next slide. So these are all the hardware components that we are going to use in this project. So these are just listed so that you can get to know about them. So next. So now Prince Kumar will tell you about the all the working of this line following robot. Hello guys, so I'm audible. Is my voice clear? Yeah, you are Yeah. audible. Okay, so hello everyone. So I will be explaining you the whole working of LFR. So any guesses how it works? Any one of you? If you don't even know, just yeah. Sir, it will, Yes, sir, actually, it will, it's echoing. Um, no worries. You can take your time. okay, sir, actually, इसमें, sir, echo क्यों हो रहा है? एक मिनट अब हम्म, सर इसमें ना जो ये IR सेंसर यूज हुआ है, ये जो ब्लैक की जैसे टेप है, तो उससे ये डिटेक्ट करेगा कि कौन से मतलब ब्लैक लाइन है, मतलब विजिबल लाइट जहाँ नहीं आ रही वो जहाँ इसको ये सेंस करेगा सेंसर से. yes, you're right. So okay, great. So now let me explain it in detail. सो सबसे पहले तो हम डिटेक्शन करेंगे तो उसके लिए वी विल यूज टू IR सेंसर्स which consist of an IR LED and a photodiode. So you guys must remember what is a photodiode, right? Okay, so any guesses? Photodiode, guys, just अगर कुछ थोड़ा सा ही बताओ तो याद हो 12th का. सर ये फोटो डायोड मतलब विजिबल लाइट के लिए ही होता है, मतलब लाइट के आती है इसमें, वो डिटेक्ट करते हैं. Yes, great. So basically what happens here, just like Ananya said, that light is emitted from the IR LED. So now we all know that dark surface absorbs all the light, and the light colored surface reflects the light. So I guess you can get an idea. So in case of a big surface, it has low reflectance. So what will happen here? It will absorb all the light, due to which light will not reach the photodiode. So we set up the two IR sensors on the either side of the black line on the floor, as you can see in the image. Sankar, can you show the next slide? Next, Sankar, the next one. Sankalp?
Yes, you can. So now let me give you an example just to clear everything. For example, if the sensor one detects that there is a black line, it means that there is a right turn ahead. As you can see in the diagram, that sensor one is detecting a black line. So what exactly will happen is Arduino will detect the change and will send signal to the L293D motor drivers. So for right turn, the BO motor. So you guys remember what was BO motors? Just now Prince told you about the BO motors. Yeah, yeah, great. So the BO motor on the right side of the robot is slowed down, while the motor on the left side runs at the normal speed. So now you will get an idea, like if the right is moving slowly, so it will be at a point, and if the motor on the left side is moving faster, it will make a turn. So any one of you would like to explain about the how the left turn will take place? Anyone? Just now I explained you about the right turn. I think Gitansh is raising hand. You can unmute yourself and tell the answer. Okay, to take a left turn, the left wheel would stop while the right wheel moves, so it would take a, a clockwise turn. Yes, yes, great. So basically, that's all for the working. It's very basic. Now, I would like Sankalp to proceed with the coding part of this Arduino LDR. Sorry, LFR. Okay, so this is the circuit diagram that we followed to make our LFR. You can see that we have connected the IR sensors to the analog input part of the Arduino board. Okay, the exact pins we'll get to it when we'll go through the code. Okay, and on the digital output we have connected the L298 motor driver, and further through which the BO motors are connected. And here we have a battery for power supply. Now I'll move on to the code. Okay, so we'll start the code by first defining the right and left IR sensors at pin 11 and 12. And then we define the motor speed as 500. Okay, then we define which pins the L298 motor drive is connected. So here the right motor pins are connected at 6, 7, 8, and the left motor pins are connected at 5, 9, 10. Now we move on to the void setup part. So this line is really important, so please pay attention. I've also written this in the comment here, the reason behind this line. So what the problem with TTK gear motors is that at very low PWM value, it does not even rotate. And if we increase the PWM value, then it rotates faster, and that robot is not controlled in the speed and goes out of line. So for that, we need to increase the frequency of analog write. So because of this line, the motor runs in a controlled manner, that is at a lower speed and at a high PWM value. Okay. So this sets the frequency at 7812.5 hertz. Now we define the motors as the movement of the motors as the output, and the sensor data from the IR sensors as the input. And initially we set both the speed of both right and left motors as 0 using the rotate motor function, which we'll define later. Okay, so this is the loop. Here we define two variables to read the data from the IR sensors, right IR sensor value and left IR sensor value. Okay, so if none of the sensors detects a black line, then we have to go straight. Okay, so both we used a if else statement for. So if both value of both sensors is low, then in the rotate motor function, the speed of both right as well as left motor is given as positive. Okay, so if the right sensor detects a black line, then we have to turn right. Okay, right IR sensor value is high and left IR sensor value is low. So we set the right motor speed as negative. That is, it rotates in the negative direction, and the left one as positive in order to complete a right turn. Okay, in the similar manner, we have the left turn. And if both sensors detect the black line, then we have to stop. So we stop the
So the rotate motor function sets both speeds as 0. Now we'll define the rotate motor function, which takes two inputs, right motor speed and left motor speed. So if right motor speed is less than 0, then the right motor pin output is given as low and the right motor pin 2 output is given as high, so as the motor uh, moves in the reverse direction. If right motor speed is greater than 0, then pin 1 is high and pin 2 is low, so that it rotates in the forward direction. Okay. And then finally, if the right motor speed is equal to 0, then both are given as low, that is, it remains stationary. In the similar way for the left motor. Okay. Left motor, in this case, it moves in the reverse direction. In this case, in the forward direction. In this case, it doesn't move, it becomes stationary. And then we have written the analog write function, which Vansh told you about when he was teaching about the coding, which to enable the right and left motor initially, and the absolute value of right motor speed. Okay. So this is what our LFR looked like. Okay. This is it implementing a left and right turn. And here we have a video. You can see the lights on these sensors keep going off and on. Okay. So this was our presentation. Hope you enjoyed it. Do wait, we have a Kahoot quiz which we'll be conducting based on the session that we just took. Okay. भैया हाँ बताओ. Yes. हाँ भैया वो आप जो बोल रहे थे कि वो इम्पोर्टेंट है टीसीपी वाला वो क्या था वो समझ नहीं आया. अच्छा वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. रुको प्रेजेंट करके बता देता हूँ. यही वाला ना, ये TCC R0B. हाँ ठीक है, एक सेकंड. तो इसमें PWM शायद वंश ने बताया था. तो PWM होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. सो हमें अगर हमारे पास एक DC इनपुट होता है, तो जैसे मान लो कि 10 सेकंड के लिए उसमें हमारे पास बस दो चॉइसेस है, या तो वो जीरो वैल्यू आ सकती है जब ऑफ होगा, या तो फिर जब ऑन होगा तो उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड DC के केस में. ठीक है. तो PWM क्या करता है, हम लोग उसको यूज करते हैं टू कंट्रोल द वैल्यू. तो जैसे 10 सेकंड के लिए टोटल हमारा इनपुट आ रहा है, उसमें से 5 सेकंड के लिए वैल्यू ऑन है और 5 सेकंड के लिए ऑफ है. तो अगर इनपुट वोल्टेज जैसे 10 वोल्ट्स है, 5 सेकंड के लिए वो ऑन है, 5 सेकंड के लिए ऑफ है आउट ऑफ 10 सेकंड्स, तो वो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो 5 वोल्ट्स होगी. ये होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. तो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया इसमें 50% एफिशिएंसी है पल्स विड्थ की. ठीक है. ये तुम थोड़ा और खुद से भी पढ़ लेना PWM के बारे में, यार पीडब्ल्यूएम के बारे में ज्यादा तो कंफ्यूजन तुमको हो समझ गया में आ ना. जाएगा. तो वही ये मैंने ये बताया था कि लो PWM पे रोटेट ही नहीं करते हैं ये मोटर्स, और हाई PWM पे अगर ज्यादा ही मतलब स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी मोटर की कि वो हमारे सेंसर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इसलिए फिर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग राइट को इंक्रीज करते हैं सच दैट स्पीड भी कम रहे और PWM वैल्यू भी हाई हो जाए. बस उसके लिए ये लाइन. ठीक है. समझ में आया? किसने पूछा था? हाँ हाँ ठीक है. ठीक है. ओके. हाँ. अभय, आर यू देयर इन द मीट? Guys, just wait for 5 minutes. He's coming in the meet. Just wait for 5 minutes. Guys, if you have any query related to Arduino or LFR, you may shoot it in the chat. We'll try to answer. हेलो गाइस, आवाज आ रही है सबको?
हाँ हाँ दिव्या में आ रही है. Abhay is here, but just presenting the code quiz. Just wait for 1 minute. गाइस kahoot.it पे जाके ये पिन डाल दो तो तुम लोग ज्वाइन कर पाओगे. इसमें क्वेश्चंस जो अभी हमने बताया है उसी से रिलेटेड होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. और इसके विनर्स को स्वैग्स मिलेंगे. तो चैट चैट देख लो गाइस, अभी पे अभी लिंक भी जस्ट भेज शेयर दिया अ है, लिंक, उससे ज्वाइन राइट? कर लो जो करना चाहता है. जिसको प्रॉब्लम आ रही हो चैट से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. You guys join fast and try to be participate in the quiz. It will help you also understand what basically you have learned, right? Everyone, We you did. can also invite your friends which are not in the meeting. You can also invite them in the code quiz. यार मतलब सबको बुला लो, मतलब जो भी इंटरेस्टेड हो, बस वो अटेंडेंस फॉर्म सारे फिल कर देना मीट से पहले, एंड होने से पहले. या जो जो अटेंडेंस फॉर्म भर देगा उसको सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा पार्टिसिपेशन का. इसका काउट क्विज का मतलब काफी बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे, तो ऐसी कोई नहीं है, अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हो. Every question should be linked to that we have taught in the presentation. So don't take any tension. जब तक तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो तो हम लोगों ने ये IEEE के बिहाफ पे किया है. तो अभी मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर आके तुमको बताएंगे कि तुम कैसे ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो. और IEEE में एक बार तुम ज्वाइन करोगे ना तो ऐसे ही SIGs होती रहती हैं. SIGs आर सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप्स. तो तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से तुमको ऐसे ही तुम उस पे जो जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. हाँ, वीकली टाइम डिसाइड हो जाता है, उस पर फिर क्लासेस चलती हैं. हाँ जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह हैं वो तुम रेगुलरली पूछ सकते हो. कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो तुम, तुम्हें डाउट आ रहा है, हार्डवेयर कोई से रिलेटेड चीज कोई भी डाउट हो मतलब तो तुम पूछ सकते हो इजीली. कोई चीज कहाँ से पढ़नी है, सब चीजें पूछ सकते हो.
Hi guys, my name is Himang, and that was a great presentation by all our juniors, Sankal, Prince, Divyam, Vansh. Great work, guys. My name is Himang, and I am a membership coordinator at IEEE DTU. I'm pursuing my BTech from DTU in engineering physics, and it was really a great session, and I hope that many of you who are over here are already a member of IEEE, or maybe any of you who is not a member can surely join IEEE. Very soon, I'll be sharing the joining link in the message. Okay, you can fill that form, and we can reach out to you one by one, and we can confirm your memberships if you're interested. IEEE membership costs 1,000 rupees per year, and because of because of our activeness in the society and in the community, we have been like awarded several different benefits as well. So becoming a part of IEEE will surely lure you to several such benefits, and I hope that will benefit you a lot in future. Thank you so much, Pranay, for sharing the joining link in chat. And I really hope that this Kahoot turns out to be really very well. And for those of you who are not aware about the swags, we have the sponsors of this event have given us several different sticker packs, several different t-shirts, and many more things. So whenever we come up with a offline meetup, we are surely going to distribute those things amongst all of you. Thank you so much, and really looking forward to meet all of you in the offline meetup and IEEE. Thank you. गाइस इसमें प्लीज अपने नाम से ज्वाइन कर लो। ये जिसने भी अपने नाम के अलावा कोई और नाम रखा हुआ है, अपने नाम से ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर तुम जीत भी जाओगे तो प्राइजेस नहीं मिलेंगे। तो अपने क्लास ग्रुप्स में डाल दो सारे मैसेजेस, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है काहूट में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे यार, सब लोग यहाँ पर हैं। सेशन कैसा रहा, एक बार जरा रिस्पॉन्स दोगे? हाउ वाज द सेशन? मजा आया, नहीं आया, बोरिंग था, क्या था, कुछ बताओ। बहुत मस्त। बहुत मस्त था, कमाल कह रहा है, बहुत मस्त था। और ब्रिलियंट सेशन अच्छा सर। सेशन था। बहुत मजेदार। गीतांश, हर्षित क्या कह रहे हैं? अच्छा सेशन था वो। अच्छा सेशन था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये जो एलएफआर यहाँ पर अभी पढ़ाया, ऑब्वियसली अभी तो स्लाइड स्लाइड में सब कुछ निकल गया। बनाने में इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है बनाने में? अरे ऑफ कोर्स है, मुझे नॉलेज नहीं है अभी। क्या क्या क्या? अच्छा, गीतांश, नॉलेज नहीं है अभी अच्छे से। अच्छा नॉलेज नहीं है। तो ऐसा हाँ। करो, ये जो तुम्हारे हार्डवेयर के सारे सीनियर्स है ना, इनको ऑफलाइन मीटअप पे बुलाओ, इनसे पार्टी वार्टी भी लेना, और इनके साथ जो है बैठ करके एलएफआर भी बनाना। ठीक है? ओके। तो क्या कहते हैं, ऑफलाइन मीटअप के लिए बताओ दिव्यम, रेडी? हाँ गाइस, वी विल मीट वेरी सून वंस द कॉलेज रीओपन्स। हम भी वेट ही कर रहे हैं सब। कॉलेज तो खुलने ही वाला है ना? या अब तो खुलना ही है, मिल ही लेंगे फिर, कोई सब नहीं। मिलेंगे हम, मतलब सब भी खुलेंगे। इसके अलावा, एलएफआर के अलावा क्या क्या हार्डवेयर में प्रोजेक्ट्स तुम लोगों ने एक्सप्लोर किए? एक हमने ईडीसी भी बनाया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो भी आर्डिनो से बनाया था। अच्छा, सो और संकल्प, तुमने कुछ? भैया वो ईसीजी मैंने और प्रिंस ने बनाया था, और एक मैंने प्रोफेसर के अंडर एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पे काम किया था। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। वो थोड़ा हाई लेवल का था। उसमें हम लोगों ने 2 चिप्स यूज की हुई थी। एक HC05, वो ब्लूटूथ की चिप होती है। यस। तो तुम्हारे वो फोन का ब्लूटूथ सेंस करके डेटा आर्डुइनो के थ्रू ईएसपी पे भेजेगी। ईएसपी एक चिप।
और फिर ESP से वो डेटा एक सर्वर पे जाएगा। तो हमारे कॉलेज में वो अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम काफी जगह लगा भी हुआ है, तुम ऑफलाइन आओगे तो तुमको दिखेगा। Gitansh is also saying I tried making a Game Boy with Arduino, couldn't have gone more wrong. Okay. So in fact मैंने भी अपने सेकेंड ईयर में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। आई डेवलप्ड द RF बॉट, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलने वाला एक सिंपल रोबोट होता है, वो मैंने डेवलप किया था। LFR मैंने फर्स्ट ईयर में भी बनाया था। एंड प्रणय ऑल्सो इज हियर, एंड उसने और मैंने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट किया है। सो उन सारे प्रोजेक्ट्स को भी आई एम रियली वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम शोकेस करेंगे। एंड अभिज्ञान सर इज आल्सो हियर। अभिज्ञान सर हमारे लेजेंड है ना। ओके, आई गेस अब हम शुरू कर सकते हैं दिव्यम। Yes, we can start the quiz. मेरे नाम से कौन आ गया? ये तो मैं हुई नहीं। तो गाइस पहला क्वेश्चन तुम्हारी क्विज का, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन आर्डिनो बोर्ड? बताया गया था ये पीपीटी में, अगर किसी को ध्यान हो। Yes, this is the very basic question. All can 10 people have guessed it correctly. Let's see who gets on the top. हेमांग सर जस्ट नाम फॉर से आ गए। इन्फॉर्मेशन, हेमांग सर ये सबसे ऊपर। ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। Second question, This Arduino is also a ID. very basic question. You both can answer this. Just recall. Ten people have also answered it correctly again. Gitansh P749. It's on the top right. Now the streak is changed. Now third question, how many digital pins are there on the Uno board? This I have told in the very beginning of the presentation. Guys, the more quickly you answer the question, the more higher points you get in the quiz. So keep that in check. So now Kamal is on top. Followed by Gitansh and followed by Kola. What is the correct It's execution a process of an price Arduino board? language. Six people have guessed it correctly. Great. Now fifth, which language is the Arduino ID built on? This is the most simple question, I guess. Yes. पर ये सिंपल है, But it's tricky one, just tricky one. पर हो सकता है हो जाओ। ये नहीं पूछा है कि आर्डुइनो में हम लोग कोड किस में करते हैं। आर्डुइनो आईडी हम लोगों ने बनाया किस पे था, मतलब हम लोगों ने नहीं, जिसने भी बनाया था। हाँ, सबने वही गलती कर दी है, सबने C++ कर दिया। भैया मैंने हम जो लोग पूछा था तो आपने कहा था Zero people have answered it नहीं नहीं, correctly. हम लोग उसमें कोड C++ में करते हैं, Yes. पर वो बनाया गया जावा में है। हाँ, Syntax बनाया is गया very Java simple में। only. जो फंक्शंस हम यूज करते हैं वो होते हैं C++ बेस्ड। हाँ, Sixth question, which sensor is used in for line following robot? ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सबका सही होना चाहिए आई गेस। Fourteen people have guessed it correctly. ये भी Great, गलत कर great. दिया।
अब 5 places संकल्प सिसोदिया। तुम लोग खुद भी खेल रहे हो क्या खिलाते खिलाते? नहीं भैया, दोनों का नाम कंबाइन करके कोई आ गया है। There are some imposters also. हाँ, Gitansh is still on the top. ये भी आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से सोचो जाएगा सब। ये तो इनफैक्ट मतलब इसमें आर्डुइनो वगैरह का कुछ रिलेशन नहीं है इसमें। ये पीएनसी है एक तरीके से। हाँ, Kitansh is on streak. इतनी शांति क्यों है? मतलब क्या हो गया इतनी शांति? क्वेश्चन ही बोल दो। Mudit is saying tough question है। मदद कह रहे टफ क्वेश्चन है यार। ये तो 2 बार बताया मैंने। ये तो किसी ने डाउट भी पूछा था। चलो कोई चेंज आया लीडर बोर्ड में। सिंचैन टॉप पे है। What will be the output of the This is following basically Arduino code? Please verify it before answering the question. Nine people have guessed it correctly. This is basically the very easy one. I've told you in the very beginning of the session. Eight people have guessed it correctly. What will be the output of the following Arduino code? Similar ही है, पहले question आया था उससे। But this was a tricky one. Right. Less people have answered it correctly. स्कोरबोर्ड एकदम चेंज हो गया अब। हाँ, प्रथमेश प्रथम पे है। The if else statement can be replaced by which operator? जल्दी से आंसर करो।
17 people have guessed it correctly. Great. Great. Everybody knows this. So now We are done with Prathamesh is our on. 30 questions. Choose a correct for loop syntax. This is a easy one. If you know C or C++. This is basically for all languages where we use for loop. Only 3 people have guessed it. सर एक भी सही है एक्चुअली इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो रहा है उसमें या या इंक्रीमेंट ए भी सही लग रहा है मुझे। यस भैया ये भी सही है, एम्बिगुअस है। ये भी सही है। टेक्निकली दोनों सही हैं। देखा जाए तो वहाँ ए पर A में इनकम्प्लीट है ना, बी में दोनों इनकम्प्लीट चीज है दे भाई। रखी है इसलिए A ये में नहीं। सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट लिखा है तो इसलिए वो इनकम्प्लीट हाँ है। यार, ये दोनों नाइस सही यार, हैं। नहीं tricky नहीं questions। गुड यार। But the most appropriate answer is the last one. Yeah. वो कंफ्यूज करने के लिए ही डाला था दिव्यम भैया ने। Yes, yes. ठीक है, तुम्हारे सीनियर्स तेज हो रहे हैं, ठीक है। Last question. What is the way to suddenly come out of an or quit any loop? This is very well explained by Vansh sir. भैया मेरा लीव हो गया। ये पता नहीं क्यों मेरा दिखाई नहीं। हाँ भैया मेरा भी मेरा रिकनेक्ट हो गया। reconnect आ रहा है भैया फिर से Reconnect। करवा हाँ दो। कनेक्शन रिकनेक्ट दिखा रहा है भैया। रिकनेक्ट फिर से करवा दो भैया एक फिर मिनट से। रुक जाओ, चेक करते हैं। 15 क्वेश्चंस तक ठीक था ना सबका? लास्ट वाले में अरे ये तो problem। किसी ने attempt नहीं किया, इस बराबर। वाले में किसी का ही नहीं आया तो I मतलब think change connection नहीं और होगा। अबे का connection loss हो गया शायद। अरे जो हाँ। होस्ट है उसका कनेक्शन गया है इसलिए सबका रुक गया। हाँ हाँ नहीं, हाँ। इस वाले क्वेश्चन में 0 ही सबमिशन है ना, तो हाँ उसका तो कोई शायद नहीं, इससे effect फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन से। इस वाले में किसी We can Yeah. evaluate only up to the question 15th question, first 15 questions. हाँ. Let's see who gets on the top. Ola, what is the name? Ola on third. ये Prathamesh on second. And first is me. drum rolls. नाइस। Gitansh V7. अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, Guys, स्क्रीनशॉट please take this. हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। सब अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लेना स्क्रीन का और किसी भी ग्रुप एडमिन को सेंड ये कर देना। होला कौन है एक बार बता दो। हाँ ये तो भाई बताओ होला कौन है। रिशु उन्नत रिशु। मैं हूँ होला मैं हूँ उन्नत। हाँ उन्नत उन्नत भी अच्छा वरोल। नाम है यार, मतलब उन्नत में भी कोई मतलब बुराई नहीं है। होला क्या रख लिया भाई? हाँ वो रैंडम रख देता हूँ ना। नाइस यार, नाइस। चलो ग्रेट वर्क गाइस, ग्रेट वर्क। आई होप सबको मजा आया है ना। हाँ भैया बहुत हाँ मजा बोल आया। यार। भैया थर्ड अपने आने के लिए कुछ काफी है? फन था। हाँ हाँ भाई सबके लिए है, चिंता अपने मत करो। ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे जो अभी है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके वो रोबोटिक्स वाले ग्रुप के किसी भी एडमिन को भेज देना बस। ओके। हाँ ठीक है। भैया रनर्स अप को कुछ मिलेगा? हाँ हाँ भैया देना चाहिए। रनर अप को भी मिलेगा? सर्टिफिकेट मिल जाएगा भाई। वो सब certificate। देख सर्टिफिकेट ऑफ लेंगे तुम। पार्टिसिपेशन अच्छा मिलेगा सबको। हाँ फॉर्म भी भर सबको देना। मिलेगी, स्वैग्स फर्स्ट Attendance। मिलेंगे। टॉप 5 स्क्रीनशॉट भेज दो, हम देख लेंगे। अरे भैया मैं पिछले में टॉप 5 था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। मेरे को लगा रनर अप के लिए कुछ है नहीं। कोई बात नहीं, अब ले लेना पक्का से अब ले लेना। स्क्रीनशॉट। हाँ। और भी सेशन पे ना उसमें ले लेना, ठीक है। हाँ एक और सेशन है मेरे ख्याल से आज शाम में। हाँ, एक और ग्राफिक अंकल भैया होंगे उसमें? नहीं यार मैं नहीं होऊंगा। अरे अब बुला लो यार संकल्प भैया को। इनवाइट कर देना कोई। हाँ ठीक। और प्रणय है यहाँ पे, प्रणय प्रणय इधर। एनीवेज चलो रैप अप करते हैं, ठीक है। ग्रेट सेशन। One second भैया, we have a giveaway project for them also. अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। हाँ अगर अभी तक रुके हुए हो तो एक प्रोजेक्ट है, Please stay in the इसका meeting. लिंक हम तुमको भेज देंगे, ये तुम देख सकते हो। अभी दिव्यम समझा देगा। One नाइस। second, I just sharing my screen. Is my screen visible, Sankalp? Yes, Divyam, Yeah, it's yeah, your visible. screen is visible. Yeah, it's visible. I'm starting the simulation. One second. Yeah, basically the diagram which you can see on the board, this is basically a PIR sensor. You are all aware there are different types of sensors. We have also explained.
infrared sensors which we use in the LFR, but this is a PIR sensor. This is basically a passive infrared sensor. बेसिकली ये क्या करता है, ये हीट एनर्जी को जो है ना मतलब सेंस कर देता है फ्रॉम इट्स रेंज, इसकी जितनी इसकी रेंज है उसमें मतलब हीट एनर्जी को डिटेक्ट करके ये मतलब पता बता देता है कि कितनी हीट एनर्जी जो है डिसिपेट हो रही है इसके सराउंडिंग में। जैसे कि तुम देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये इसका पॉइंटर है, ये इसकी रेंज है जो तुम्हें पर्पल पर्पल शो हो रहा है। व्हेन इट इज इन द रेंज इट विल ग्लो द साउंड, एंड व्हेन इट इज आउट ऑफ रेंज इट विल स्टॉप साउंड. That is the purpose of PIR sensor. That is in the range, it will blow sound, and when we take off to the range, it automatically stops. That is the PIR sensor. We have used Arduino, which we have introduced in the session, right? And we have also used breadboards. Basically, normal corrections we have used. It's general knowledge you have also studied in the class 12 topics also, that is Ohm's law and basic series of parallel laws. You can also study breadboard on internet also. And anyone wants to know more about breadboard, you can ask us in the group. We can provide you the resources also. And this is basically the code of our PIR sensor. There is a void setup in which we have given the buzzer inputs and we have sensed the outputs of it. And you can also change the delay timings and the code, and the output will also change. So you can all take away this project with you. I'm providing the link in the chat. Stay here. Please take it with you, everyone. गाइस तुम्हारे गिव अवे प्रोजेक्ट का लिंक शेयर कर दिए गए हैं, इसको चेक करना, जो भी चीजें एक्सप्लोर करना, मजा आएगा। और यार जैसे ये अभी जो मैंने दिखाया ये टिंकर कैड है। टिंकर कैड बेसिकली अगर आप आर्डिनो नहीं खरीद पाते हो तो आप ऑनलाइन सिमुलेट कर सकते हो इसे, मतलब हाँ। वाली बात। और एक और बात, हम लोगों ने जैसे आर्डुइनो कब डिस्कवर किया, जैसे तुम लोगों के भी अभी प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे, हर सब्जेक्ट में तुमको एक बनाना होगा, तो हम लोग क्या करते थे कि हर सब्जेक्ट में वर्किंग मॉडल आर्डुइनो को यूज करके कोशिश करते थे कि किसी भी तरह बना दे, तो उससे टीचर पे भी इंप्रेशन जाता है कि इन लोगों ने काम किया है, इवन दो तुमने उतना काम नहीं किया होता है, और नंबर मिल जाते हैं। अरे जबकि तुम अपने फिजिक्स के प्रोजेक्ट में चिपका देना ऐसे। कोई दिक्कत मोस्टली लोग पीडीएफ बना देते हैं रिपोर्ट सीधा। हाँ, शुरू इससे करो, फिर तुम लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। हाँ, मार्क्स लाने की निंजा टेक्निक। मार्क्स लाने की निंजा टेक्निक। वो सारी निंजा टेक्निक तुमको सिखाएंगे, IEEE में आ जाओ। हमारे पास एक एक्सपर्ट है मार्क्स लाने के। हाँ, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स। भैया पेज इज मिसिंग दिखा रहा है। पेज इज मिसिंग क्या मिसिंग दिखा रहा है? एक सेकंड, उस लिंक पे क्लिक करने से। एक सेकंड, चेक कर रहे हैं। टिंकर कैड में सबको लॉग इन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद दिखेगा। दिव्यम म्यूट हो, दिव्यम म्यूट हो। आप अगर इसको मतलब अपनी आईडी से लॉगिन करोगे तो आप डायरेक्टली टिंकर कर सकते हो इसको अपनी आईडी पे। हाँ, आईडी से लॉगिन कर एक लो। बार सारे पहले टिंकर कैड पे आईडी बना लो, फिर इस लिंक को सेव करके रख लो, फिर ये खुल जाएगा डायरेक्टली। सर आईडी बनी हुई है लेकिन फिर भी पेज अनअवेलेबल दिखा रहा है। अच्छा, दिव्यम तूने कौन सा लिंक शेयर करा था? वो ऊपर जो शो होता है या अलग से शेयर करने का ऑप्शन होता है वहां से करा है? 1 सेकंड में दोबारा शेयर करता हूँ, क्या पता तुम उसे ओपन कर पाओ। यार वहाँ शेयर करने का ऑप्शन होता है, वो वाला लिंक शेयर करियो। ऊपर जो शो होता है ना क्रोम पे, वो वाला मत भेजियो। पेज इज मिसिंग आ रहा है। अरे भैया लॉगिन ही करनी है तो वो तो कर लेंगे हम, उसकी टेंशन मत लो। किसी का भी ओपन नहीं हो रहा क्या, मतलब जैसे, या फिर कुछ? नहीं भैया, 1 सेकंड वेट।
इस लिंक को ओपन करो एक बार, फिर चेक करके बताओ। हो गया भैया, चालू हो गया। ओके ओके, किसी को इश्यू तो नहीं है? मतलब देख लो, अभी भी हो जाएगा, फिर मीटिंग एंड होने के बाद दिक्कत आ सकती है। मीटिंग एंड होने के बाद वापस